The poem Requiem is an elegy on the death of a young woman Mary and was composed by KS Nongkynrih in Khasi language. He is the resident of Shillong, the capital of Meghalaya. In this poem the poet evokes a sense of mystery and unease. रेक्विम कविता एक युवा महिला मेरी की मृत्यु पर आधारित एक शोक गीत है और इसकी रचना KS नोंगकिनरेह ने खासी भाषा में की थी। वह मेघालय की राजधानी शिलांग के रहने वाले हैं। इस कविता में कवि रहस्य और बेचैनी की भावना जगाता है। The moans that floated into the still autumn nights were borne by the cold winds onto the season of carols. I heard them nightly beating against the window panes like disembodied tenebrios pleading to be let in. The poet states that the moans that are heard during the quiet autumn nights are carried by the cold winds and seem to be symbolically connecting them to the season of carols, creating an eerie contrast. The poet hears these moans throughout the night as they beat against the window panes, resembling disembodied tenebrios, dark creatures. The moans seem to plead for entry, intensifying the mysterious and unsettling atmosphere. कवि का कहना है कि शांत शरद ऋतु की रातों के दौरान सुनाई देने वाली कराहें ठंडी हवाओं द्वारा लाई जाती है और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें कैरोल्स के मौसम से जोड़ती हुई प्रतीत होती है, जिससे एक भयानक विरोधाभास पैदा होता है। कवि इन कराहों को रात भर सुनता है जब वे खिड़की के शीशों से टकराते हैं, जो अशरीरी टेनेब्रियोस एक अंधेरा प्राणी के समान होते हैं। कराहें प्रवेश की याचना करती प्रतीत होती है, जो रहस्यमय और अशांत वातावरण को तीव्र करती है। I heard them as I went to sleep and heard them as the rooster sounded his first call to the sun. I heard them as the clocks summoned schoolboys to their texts and heard them as the muezzin loosed his azan into a murky air. What was wrong with Mary? Her very name calls upon God to protect. The poet continues to hear the moans when he goes to sleep. Even in the morning when the rooster crows and the clocks summon schoolboys to their studies and as the muezzin releases his azan into the murky air. These cultural references of muezzin's call signifies the impact of moans on different aspects of life. The focus then shifts to the young girl Mary, whose very name calls upon God for protection. कवि को कराहें तब भी सुनाई देती रहती है जब वह सोने जाता है, यहाँ तक कि सुबह में भी जब मुर्गे बांग देते हैं और घड़ियां स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए बुलाती है और जब मुअज्जिन गंदी हवा में अपनी अजान छोड़ता है। मुअज्जिन की पुकार के ये सांस्कृतिक संदर्भ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कराहों के प्रभाव को दर्शाते हैं। फिर ध्यान युवा लड़की मेरी पर केंद्रित हो जाता है, जिसका नाम ही भगवान से सुरक्षा की गुहार लगाता है। But there she was moaning as naturally as a sleeper snoring, no doctor came, and finally, only two titanic tarantulas, one black, the other with a crimson chest, crept with slow hairy steps, like skulkers of the night, and hauled her off to their invisible lair. However, Mary is found moaning naturally, like someone snoring in their sleep. The absence of a doctor raises questions about Mary's condition and lack of assistance. And only two titanic tarantulas, one black and the other with a crimson chest, emerge as ominous figures. They move slowly and stealthily, similar to skulkers of the night, and they take Mary away to their invisible lair. This conclusion suggests a dark and unknown fate for Mary, adding to the sense of mystery and danger established throughout the poem. हालांकि मेरी को स्वाभाविक रूप से कराहते हुए पाया जाता है, जैसे कोई नींद में खर्राटे ले रहा हो। डॉक्टर की अनुपस्थिति मेरी की स्थिति और सहायता की कमी पर सवाल उठाती है और केवल दो टाइटैनिक टारंट्युला, एक काला और दूसरा गहरे लाल रंग की छाती के साथ अशुभ आकृतियों के रूप में उभरते हैं। वे रात के स्कुल्कर्स की तरह धीरे धीरे और छिपकर आगे बढ़ते हैं और वे मेरी को अपनी अदृश्य मांद में ले जाते हैं। यह निष्कर्ष मेरी के लिए एक अंधेरे और अज्ञात भाग्य का सुझाव देता है, जो पूरी कविता में स्थापित रहस्य और खतरे की भावना को जोड़ता है।
Love broke into loud lamentations, the mother cried for divine explanations, mourners swarmed her deathbed. A tent was erected, the courtyard, illuminated, a tearful vigil was kept up, for 2 consecutive nights. Love broke into loud lamentations, indicates the emotional impact of the girl's death and the various rituals and activities that take place during her funeral. Her mother seeks divine explanations for the tragedy. Mourners gather around the girl's deathbed, creating a sad atmosphere. A tent is erected, and the courtyard is illuminated to accommodate the visitors. A tearful vigil is held for 2 consecutive nights, emphasizing the depth of grief and mourning. लड़की की मृत्यु के भावनात्मक प्रभाव और उसके अंतिम संस्कार के दौरान होने वाले विभिन्न अनुष्ठानों और गतिविधियों को इंगित करता है। प्यार जोर-जोर से विलाप में बदल गया, एक तंबू खड़ा किया गया है और आगंतुकों को समायोजित करने के लिए आंगन को रोशन किया गया है। दोहक और शोक की गहराई पर जोर देते हुए लगातार 2 रातों तक एक अश्रुपूर्ण जागर आयोजित किया जाता है। Packs of cards were bought, raconteurs joked, sympathisers guffawed, her body was bathed and scented, utensils were rented, she was dressed in her favourite clothes, adorned with her favourite trinkets, a funeral feast was hosted, packs of cards are bought, and raconteurs tell jokes, while sympathisers laugh, perhaps attempting to find moments of solace or distraction from the sadness. The girl's body is prepared for the funeral with care and respect. It is bathed, scented, and dressed in her favorite clothes and trinkets, symbolizing her personal preferences and individuality. A funeral feast is hosted. कार्डों के पैकेट खरीदे जाते हैं और मजेदार कहानियां सुनाने वाला चुटकुले सुनाते हैं, जबकि सहानुभूति रखने वाले हंसते हैं, शायद सांत्वना के क्षण या दुख से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़की के शव को देखभाल और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जाता है। इसे नहलाया जाता है, सुगंधित किया जाता है और उसके पसंदीदा कपड़े और आभूषण पहनाए जाते हैं, जो उसकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और व्यक्तित्व का प्रतीक है। एक अंत्येष्टि भोज का आयोजन किया जाता है। Church elders were invited, the cortege assembled, prayers were offered, Kwai *in dishes was ordered, sermons were shouted, gossips were floated, palms were read, tea and biscuits were distributed, and church elders are invited to offer prayers and support to the mourning family. The cortege is assembled, and sermons are shouted, highlighting the religious aspect of the funeral proceedings. Gossips are floated, implying the presence of idle chatter and speculation. In a moment of reflection, palms are read, suggesting an attempt to find meaning or reassurance in divination. Tea and biscuits are distributed, indicating a gesture of comfort and hospitality towards the mourners. और चर्च के बुजुर्गों को प्रार्थना करने और शोक संतप्त परिवार को समर्थन देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जुलूस को इकट्ठा किया जाता है और अंतिम संस्कार की कार्यवाही के धार्मिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए उपदेश दिए जाते हैं। गपशपें उड़ाई जाती है, जो बेकार की बकवास और अटकलों की मौजूदगी का संकेत देती है। चिंतन के एक क्षण में हथेलियों को पढ़ा जाता है, जो भविष्यवाणी में अर्थ या आश्वासन खोजने का प्रयास करने का सुझाव देता है। चाय और बिस्कुट बांटे जाते हैं, जो शोक मनाने वालों के प्रति आराम और आतिथ्य का संकेत देता है। Then, her sudden demise was sadly lamented, such a young girl, such a sweet girl, such promise, but the eschatologists offered some comfort. They were happy she went so peacefully. Finally, there is a twist in the last lines. The poem mentions that the eschatologists, those who study or discuss the concept of the end of life, find solace in the fact that the young girl passed away peacefully. This perspective offers some consolation in the face of tragedy, emphasizing that the manner of her passing brought some measure of comfort to those who care about her. अंतिम पंक्तियों में एक मोड़ है। कविता में उल्लेख किया गया है कि युगांत शास्त्री, जो जीवन के अंत की अवधारणा का अध्ययन या चर्चा करते हैं,
इस तथ्य में सांत्वना पाते हैं कि युवा लड़की शांति से मर गई। यह परिप्रेक्ष्य त्रासदी के सामने कुछ सांत्वना प्रदान करता है, इस बात पर जोर देता है कि उसके निधन के तरीके से उन लोगों को कुछ हद तक आराम मिला जो उसकी परवाह करते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।